guys, and welcome back to my channel, My PhD Life. This is the first video that I'm doing after coming back to IC campus in my hostel room. This is the best I could do with the ambience, but I'll try to get more props and things in places as time passes. So I hope you like the ambience, but more importantly, it's always about the content and the discussions that we're going to have. So let's get started. Since I started the YouTube channel and I started making these conversations about careers in research and how you could do a PhD, what a PhD program is like, I've been fortunate to be invited to a couple of undergrad interaction sessions. तो मैंने 2-3 सेशंस किए at different colleges, बहुत सारे undergrad students से बात की, and one of the common question that came out in all those sessions was कि हम अपने बीटेक को बेटर बनाने के लिए क्या करें. What are the things जो हमें अपने बैचलर्स में करनी चाहिए, हम अपना बैचलर्स बेटर कैसे प्लान कर सकते हैं. these sort of underlying questions were common in all the sessions. I don't know अगर आपको पीछे से आवाज़ आ रही है नहीं, but these are pigeons in my balcony, and if you have watched the previous video on my channel, then you know what pigeons can do with my life. But coming back to the point, since ये बहुत common question था जो many undergrads were asking, and they were curious to know about this, and it was happy to see them excited, to plan their bachelor's better, and that they're thinking of these important questions. So I thought that let's make a video on what my take has been on this, and how do I think that students can plan and do their bachelor's better, and what are the kind of things they can do to get the best out of the experience. The engineering bachelor's program, जिसको हम BTech या BE बोलते हैं, that is for 4 years, and the sciences bachelor's was for 3 years, but many places are changing it now, and वहाँ पे bachelor's in sciences भी 4 साल की हो रही है, होने वाली हैं या हो चुकी हैं. तो I'll try to focus on how you can plan those 4 crucial years of your life, which are also I feel were the years जब मैंने या स्टूडेंट्स अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत डिस्कवर करते हैं, स्पेशली इफ दे गो आउट ऑफ देयर हाउस एंड लिव इन हॉस्टल्स. एंड आई थिंक आई विल कलेक्ट ऑल माई थॉट्स ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ दोज 4 years, माई पीयर्स एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स. मैं एक डे स्कॉलर थी बैचलर्स में, तो मैं घर पे रहती थी, एज आई हैव टॉक्ड अबाउट इन माई वीडियोज अर्लियर, एंड आई हैव सीन हाउ मेरे जो फ्रेंड्स हॉस्टल्स में रहते थे उनकी क्या जर्नी थी, और हाउ they were exposed to situations which I probably was not, because मैं घर पे रहती थी. I'll talk about those details also. So let's start with talking about what I think can be one of the good ways of exploring the first 2 years of your bachelor's program. I believe the first 2 years should be very exploratory. मतलब एक डिस्कवरर की तरह, और ऐसे कि एक ट्रिप पे जा रहे हैं सोच के, you take those first 2 years and try to explore as much as possible. जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, if you were pretty sure, कि I like coding and I want to be a computer science engineer, और जैसा वो लोग काम करते हैं मुझे वो काम बाद में पसंद है, इसलिए मैंने ये डिग्री करनी है, then you're pretty clear and sorted on why you got into that program. So focus on that and explore कि along with your curriculum, what are the other things जो आप कर सकते हो to make your experience more fulfilling. गैदर स्किल्स जो आपको 4 साल के बाद आपकी डिग्री कंप्लीशन पे एज देंगे amongst your batchmates, which will make you stand out and make you different, and hence more attractive to employers who come in for placements. But more commonly जो इंडिया में स्पेशली हम स्टूडेंट्स में देखते हैं, is that not most of us are sure कि हमने जिस बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, is it exactly what we want to do with our lives, say 4 years down the line, जब वो प्रोग्राम ख़त्म होगा. Some people go to some particular streams because वहाँ पे पे पैकेजेस अच्छे होते हैं, तो they want to feel secure about their life after they do that degree, which is a wise decision and a point that you should consider. But I think that should not be the only point that you consider. कुछ लोग अपने घर वालों के जो वो बताते हैं कि आपके बड़े भैया ने ये किया था या आपके कज़न सिस्टर ने ये किया था, एंड देखो उनको अच्छी जॉब मिली एंड एवरीथिंग, तो आप भी ये स्ट्रीम ले लो करके दे चूज़ वन पर्टिकुलर स्ट्रीम. एंड देन देयर आर मैनी अदर पीपल हु आर एट द मर्सी ऑफ द मार्क्स एंड द रैंक्स दैट दे गॉट,
That's unfortunate, but a bitter truth, and that's what we live with. And based on that, they go with whatever they can get with the marks and the credentials that they have. So this is sort of the more popular scenario with undergrad students. And I thought that it's important to talk about these factors honestly and then talk about how they can use the first 2 years of their bachelor's program to explore more and know about things जो उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में मिस कर दी हूँ. तो उन लोगों के लिए जो अपने बैचलर्स प्रोग्राम में आ गए हैं बट आर नॉट वेरी श्योर कि उनको वो स्ट्रीम पसंद है या नहीं, उनको वो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या ब्रांच ऑफ साइंस पसंद है या नहीं, एंड देयर हैव बिन मैनी प्रेशर पॉइंट्स जिसकी वजह से वो उसमें आ गए हैं. यूज़ द फर्स्ट 2 years वाइजली. बहुत सारी और फ्यूचर करियर ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आपको उस टाइम ना पता हो. तो ये 2 साल में यूज़ इंटरनेट, यूज़ योर कनेक्शंस इन द डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है. उस डिपार्टमेंट के सीनियर्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम. उस डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम टू लर्न कि पहले जो बैचेस थे जो पास आउट हुए हैं वो लोग कैसे क्या किस तरह की जॉब्स कर रहे हैं. दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप विच विल गिव यू ऑप्शंस अवेलेबल इन द सिस्टम दैट यू हैव गॉटन योरसेल्फ इनटू. उसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की बट अभी कोई लॉ परस्यू कर रहा है, कोई लोग MBA करके जॉब्स कर रहे हैं, कोई लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं PhD करने लगी, कोई लोग फाइनेंस में चले गए. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम इस ड्यूरेशन में एक्सप्लोर करके उनके बारे में पता कर सकते हैं और जान सकते हैं इफ़ यू नो दोज आर द थिंग्स दैट यू लाइक एज अ पर्सन टू डू इन योर लाइफ. तो पहले 2 साल हमने इस पर प्रॉपरली काम करना है, एक्सप्लोर करना है. अगर हमें पता लग गया है कि हम जिस फील्ड में आए हैं परफेक्ट मैच है एंड दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू डू, तो उसमें हम कैसे और बेटर बन सकते हैं टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम आवर बैचमेट्स, इस पे काम करना है. अगर हमें लग रहा है कि ओ नो गलत प्रोग्राम में आ गए, मुझे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पसंद है, मुझे तो आर्ट्स पसंद है, यू नो इतना ड्रास्टिक चेंज भी होता है एंड पीपल डू दैट एंड दे आर सक्सेसफुल गिवन यू हैव फेथ इन वॉट यू आर डूइंग एंड आपने अच्छे से अपने आप को एनालाइज किया है, अपने स्किल्स को भी इवेल्यूएट किया है. मुझे म्यूज़िक पसंद है बट मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, इज़ अ प्रॉब्लम राइट. मुझे आर्ट्स पसंद है पर मुझे पेंटिंग नहीं आती, या मुझे लिखना नहीं आता, पोइट्री नहीं आती. देन वॉट एम आई, क्यों मुझे आर्ट्स पसंद है और मैं आर्ट्स से क्या करना चाहती हूँ. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप अपने 2 साल में एक्सप्लोर कीजिए एंड गेट टू नो मैनी ऑप्शंस. ये तो हुए प्रोफेशनल फ्रंट की बात. वो फर्स्ट 2 years आपको पर्सनली भी एक्सप्लोर करना चाहिए. आई फील दैट बैचलर्स के टाइम बहुत सारा फ्री टाइम होता है जो PhD में आगे पता चलता है कि नहीं होता. तो देन आई फेल्ट कि अरे इतनी सारी चीज़, मुझे गिटार बजाना सीखना था जो मैंने PhD में शुरू किया एंड देन अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फॉलो इट प्रॉपरली. बट BTech में इतना टाइम था जो मैं यूज़ कर सकती थी टू लर्न अ गिटार. स्विमिंग सीखनी थी, टेनिस और खेलना था. सो देर आर सो मैनी थिंग्स जो मैं अपने BTech में और अच्छे से टाइम स्पेंड करके सीख सकती थी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए. योगा मैंने PhD प्रोग्राम में आने के बाद शुरू किया बट आई कुड हैव इजीली स्टार्टेड इट ड्यूरिंग माई बैचलर्स. सो प्लीज़ टेक दैट टाइम टू ऑल्सो डेवलप एंड डिवोट टाइम ऑन योर पर्सनल पैशंस. फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाओ, बहुत सारी मस्ती करो, क्लासेस कभी कभी बंक करते हैं बीइंग ऑनेस्ट ना. बट इन एडिशन अपने पर्सनल पैशंस पे भी काम करो. अब 2 साल बहुत एक्सप्लोरेशन हो गई, बहुत सारी नई चीज़ें ढूंढ ली, चीज़ों के बारे में पता किया. द 3rd year इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल क्योंकि इसमें आपको स्ट्रीमलाइन करना है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर की, लॉ, फाइनेंस, एक्टिंग, आर्ट्स, यूट्यूब, डांसिंग, यू नो मैनी अदर ऑप्शंस, इसमें से मैं कौन से टॉप 2 या टॉप 3 चॉइसेस चूज़ कर रही हूँ जिसके ऊपर अब मैं 1 साल स्ट्रीमलाइन होके काम करूँगी एंड बिल्ड करूँगी बोथ इन जो भी पर्सनल इंटरेस्ट मैंने चूज़ किए हैं और जो भी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स मैंने चूज़ किए हैं. सो द 3rd year इज़ ऑल अबाउट स्ट्रीमलाइनिंग, मेकिंग or choosing your top 3 priorities, top 2 priorities, and working on them dedicatedly. And then of course, the 4th year, showtime, is where all of your work of the last 3 years is going to be tested. अगर आप confident थे that
यही स्ट्रीम है जिसमें मुझे आगे जाना है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, then you'll have companies coming in your department, or you can apply for off-campus placements and get into the kind of profiles that you enjoy and are fortunate to get at that point of time. अगर आपने realize कर लिया था in that exploratory phase that law is something that I want to do, then you have to write that entrance exam to get into a law degree. So fourth year is important for that. Engineering students के लिए GATE exam होता है fourth year में. Bachelors in science students के लिए they have to do an MSc to write a GATE. But there are other exams that they can write depending on किसी को teaching में interest आ गया and they want to become a teacher. Then you have to write an exam for B.Ed entrance. या वो कॉलेजेस ढूंढने हैं जो आपके बैचलर्स के स्कोर्स के हिसाब से आपको एडमिशन देंगे, उनकी एडमिशन डेडलाइंस होंगी, एप्लीकेशंस होंगी, वो सब आपको करना है. सो फोर्थ ईयर इज़ शो टाइम, एंड जो भी एक्सप्लोरेशन एंड स्ट्रीम लाइनिंग आपने अपने फर्स्ट 3 years में की है, फोर्थ ईयर इज़ द टाइम टू मेक इट काउंट एंड गो ऑल आउट फॉर इट. जो भी करियर ऑप्शन आपने पसंद किया है, make sure you're following all the latest news in that, all the latest announcements about applications and job applications or exam applications, and make your applications in time, prepare for the exams well, and all the very best. Cool. So these were my thoughts on how I think one can plan a 4 years bachelor's degree, exploration, streamlining, and then go give your best. And as I said in the beginning, the experience of your bachelor's is going to be very very different अगर आप घर पे रह रहे हो in comparison to if you're staying in a hostel. If you're at home, generally people have timings of when they leave their home for college and then eventually by evening they come back. But अगर आप hostel में रह रहे हो, then life is going to be more exciting and more eventful because all the 24 hours of your day are going to be in a hostel with your friends. And random plans banenge, you'll go out for random parties or trips, and generally there are all night discussions of things that friends would want to do in future. बहुत serious life discussions भी होते हैं because you form a very strong bond of friendships with people who are around. because कभी भी आप बीमार हो, कोई प्रॉब्लम है, आपका मूड खराब है, एग्जाम में मार्क्स कम आए, किसी प्रोफेसर ने स्कोल्ड कर दिया, किसी से लड़ाई हो गई, it is going to be a friend group, that's going to be a support system and your cushion to fall back on. And जब आप घर पे रहते हो तो then you have a very supportive and caring family जो आपके फ्रेंड्स के साथ उसका सब्सटीट्यूट बनती है. So the kind of experiences will be very different. हॉस्टल में जब खुद से रहते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, योर फूड, योर क्लोथिंग, क्लीनिंग, नॉट क्लीनिंग, लिविंग इन अ मेसी रूम, all of that. That also sort of builds a character over time, tells you about a lot about your personality. तो ये सारे experiences भी important हैं to make you strong and independent over time. I hope this video helps all the bachelor students, the undergrad students out there to improvise on their bachelor's program. बहुत सारी मस्ती भी करनी है. I keep emphasizing this in all my videos कि जब भी हम अपने प्रोफेशनल गोल्स और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डेवलप करने के प्रोसेस में हैं, हमें मिस नहीं करना कि हमें लाइफ के वो क्रूशियल ईयर्स मिस नहीं करने, बिकॉज वो भी वापस नहीं आएंगे दोबारा. तो दोस्तों के साथ पार्टी भी करो, ट्रिप्स पे भी जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ ट्रिप्स पे जाओ, along with keeping your professional agenda in mind and अपने personal skills भी develop करते रहो. I'll see you guys soon. I hope this was helpful. And अगर आपके और कोई भी questions हैं about undergraduate programs, applications that you can make, how you can explore, put them down in the comments section and I'll get back to you. See you soon. Take care. Bye-bye.